my channel. I am Siddharth Ghosh, and in this lecture, we're gonna start. Not we're gonna start. We're gonna finish this chapter called power sharing, and in the next lecture, will be discussing about outcomes of democracy for CBSE classes. So let's start with this chapter. So we have covered story of Belgian story of Sri Lanka, majoritarianism in Sri Lanka and accommodation in Belgium. Why power sharing is desirable and forms of power sharing we are gonna do. And this lecture, I'm gonna finish with this lecture. So let's start. So accommodation in Belgium. Between 1970 and 1993, Belgium's constitution amended four times to work out an agreement that would make everyone to live together. The elements of the Belgian constitution prescribes that the number of Dutch and French-speaking ministers shall be equal in the central government. So constitution जो है वो प्रिस्क्राइब करता है नंबर ऑफ डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स जो हैं ये शुड बी इक्वल उनको इक्वली ट्रीट किया जाए इन द शुड नॉट बी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन राइट कि डच के साथ या फ्रेंच के साथ ज्यादा उनको मिल रहा है और डच वाले को कुछ मतलब उनको मिनिस्टर्स को मिल रहा है so it should be equal. Many powers on the central government have been given the state governments of the two regions of the country. तो बहुत सारे powers जब central government को मिल जाते हैं to state governments, so many powers जो है central government को मिलते हैं which have been given to state governments of the two regions मतलब दो region एक Brussels has a separate government. Brussels की एक separate government है in which both the countries have equal representation. So Brussels has a separate government which both the communities have equal representation. ये एक equal representation है but Brussels का जो है it is a separate government. तो जो दो communities हैं उनको equal representation मिल रहा है. There is also provision of community government है जो social groups को मिलता है like religion and education language related issues के लिए काम कर मतलब ये इस issues पे काम करता है social groups को मिलता है community government. So community which has the power regarding cultural, educational and language related issues. तो ये community इसका मतलब इस issues को देख के वो काम करती है. Forms of power sharing. In modern democracies, power sharing arrangements can take many forms. तो बहुत सारे forms बनते हैं इसमें हम four पढ़ेंगे like horizontal distribution, federal government, vertical, and about different social groups and can also think political parties, pressure groups so हम पढ़ते हैं. So horizontal distribution जैसे इंडिया हमारा है ना different organs जो हैं जैसे हमारे organs होते हैं अलग इन पॉलिटिकल मतलब पॉलिटिकल सेंस में डिफरेंट ऑर्गन्स गवर्नमेंट का है जैसे लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव जुडिशरी है ना हाई सुप्रीम हाई कोर्ट ये सारा मतलब इंडिया में है ना फेडरल गवर्नमेंट कैन बी शेयर अमंग डिफरेंट लेवल्स एक डिफरेंट लेवल्स में जो पावर है इट कैन बी शेयर अमंग गवर्नमेंट like a general government for the entire country and government at the political मतलब एक entire country के लिए and government at the provincial or regional level. For example, USA में power may be shared among different social groups. जैसे मैंने आपको community government का बोला जो which is in Belgium है ना Belgium में मैंने बात किया अभी like the community government जब हमने बात किया which looks at the language related issues, educational issues, कल्चरल इश्यूज है ना तो उसमें वो देखती है social group and power sharing can also be done in the way political parties pressure groups and movements control or influence those in power. So power sharing इसमें भी देखा जाता है कि in political parties pressure groups movement control or influence those in power जो power में है right. So these are the forms of power sharing. So guys हमने इसको देखे हमें कंप्लीट मतलब ये स्लाइड के बाद हमने कंप्लीट कर लिया चैप्टर एंड देन इन द नेक्स्ट क्लास हम लोग आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी भी पढ़ेंगे एंड फॉर सीबीएसई क्लास 6 ऑल्सो
मैं चैप्टर एक स्टार्ट करूँगा डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन फॉर CBC classes and for CBC classroom outcomes of democracy. And thank you guys. So I'll see you soon.